6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीप के जी के साथ। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊँगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहाँ से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये अभी दीप की लड़ाई नहीं है, हम तीनों की लड़ाई नहीं है। From social media movement to iconic Jantar Mantar, from reels to reality, Cockroach Movement's buzz is now inching towards the streets of the national capital. Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke is expected to lead a protest demanding accountability over a series of education-related controversies and seeking the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Well, supporters argue that students deserve greater transparency and accountability from institutions responsible for their academic future. The founder is returning to India from the United States, specifically to participate in the protest, marking his first visit since launching the movement. While there is no clarity on how things will unfold in Delhi on June 6, big names have thrown their weight behind this movement. From Shashi Tharoor to TMC's Mahua Moitra to Sonam Wangchuk, prominent voices have backed CJP. While Wangchuk has confirmed that he will join the protest, all eyes are now on Jantar Mantar for June 6. Well, within days of its launch, the movement began attracting attention from across the political spectrum. Two Trinamool Congress MPs, Mahua Moitra and Kirti Azad, publicly expressed interest in joining the Cockroach Janata Party, a gesture that was warmly acknowledged by the party's social media handle. Wangchuk has said the concerns being raised deserve serious attention and has called for deeper reforms in India's education system. Adding further momentum to the movement, actor Prakash Raj has also extended his support and indicated that he may participate in the protest in Delhi. His backing brings another high-profile voice to a campaign that is increasingly moving beyond social media and into the national political conversation. Meanwhile, CJP has begun formalizing its structure, appointing spokespersons and signaling a transition from a purely digital movement to an organized public campaign. Ahead of his arrival, founder Abhijit Deepke has appealed to supporters not to crowd the airport and has instead urged them to focus on the planned demonstration. He has repeatedly described the protest as a peaceful and constitutional in nature. Meanwhile, a self-styled activist, Preet Singh Sirohi, has emerged as a bitter critic of CJP's Jantar Mantar protest, who has even threatened to trash anti-national protesters. सोनम वांगचुक अभी जेल से आया है कुछ दिन पहले। उसके ऊपर क्या आरोप थे, किन आरोपों में वो जेल गया, ये सर्वविदित है, समाज के सभी लोग जानते हैं। कल तक वो लोग जंतर मंतर पर आने की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट को घेरने की बात कर रहे थे। कल रात को उनकी पार्टी का जो प्रमुख है उसका बयान आया कि आप लोग एयरपोर्ट मत आइए, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचेंगे। हम लोग हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सब इंश्योर दिल्ली पुलिस करेगी और आज शाम 5 बजे 50 से अधिक अधिवक्ताओं का हमारा एक दल डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन डीसीपी नई दिल्ली को सौंपेगा। और उसके बावजूद भी अगर दिल्ली में शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली को जैसे उनके बयान आ रहे हैं कि हम नेपाल बना देंगे, देश को बांग्लादेश श्रीलंका बना देंगे, इस तरह की अगर कोई कोशिश होगी तो हम समाज के लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। हम इस तरह की स्थिति दिल्ली में नहीं बनने देंगे कि कोई आएगा विदेश में बैठकर कोई विदेशी फंडिंग से या कोई षड्यंत्र करेगा और देश के भोले भाले युवाओं को लेकर भ्रमित करके सड़कों पर उतरेगा और हम तमाशा देखते रहेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी घटना होगी, माँ भारती के सम्मान में कोई उल्टे सीधे बयान दिए जाएंगे, देश विरोधी बयान दिए जाएंगे, तो हम पुलिस की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। Sirohi also tried to file a PIL against the CJP's protest. As chances of quagmire loom large over demonstration, Cockroach Janata Party has also issued a list of do's and don'ts. Well, will this online movement successfully translate digital support into a significant show of strength on the ground? The answer could emerge at Jantar Mantar if CJP founder Deepke manages to pull as many cockroaches together. And what unfolds at Parliament Street Police Station, where the cockroach boss is expected to reach tomorrow to seek permission for the protest. And that's a wrap from my side. Thank you so much for watching, and I am Muskan, signing off for Times Now Digital.
Until next time, take care and keep watching this space for more such videos.